My dear student, Om Jai Guru to all of you. So I have tried a lot to keep you all in touch in study during these pandemic situations by uploading video of different topics. Recently I uploaded the first part of the story of class 9 Trunk of Ganesh in my YouTube channel. Today I am going to upload the second part of the story, the interesting story Trunk of Ganesh. I hope you all will enjoy and understand it by heart. Come to the part. The 61 years old Govinda had a large family to support. So before going to the second part, we will discuss a little about the first part, that Govinda's life was in a disorder situation as he didn't convince himself where he had made mistakes. He became in a mad-like situation. His wife Sulochana was also in such a situation that her husband was something going wrong in his husband's mind. Besides, he became so proud that her people said that her husband was a righteous person. Besides, he is the finest image maker in the whole valley. That's all we discussed in the first part. Now come to the second part. In the second part, the starts with about the age and family members of Govinda Maharana. The 61 years old Govinda had a large family to support. Govinda Maharana's age was 61 years. That means at the age of 61 years, he had a large family to support. That means ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ family କୁ maintain କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା at such age. So this family included a son who had a wife, ଗୋଟେ son ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, wife and two children. And here that means the son had also a family of himself. He had turned out to be an irresponsible drifter, and that son was an irresponsible drifter. That means तार कौन सी responsibility से नौनुतला, family कथा किसी बुझुनतला, मन इच्छा से time ताको spend करुतला. Irresponsible drifter who spent his days, देखि ता दिन टाको spend करे, who spent his days away from the house, घर टू बाहर को काम रे fishing idly, lazily जाई खाली माछ धरिबा, fishing idly for a shrimp and crab in the Mahanadi. Mahanadi रे जाई shrimp और crab ये सब धरिबार से time टाको तार spend करे. Then the second son had been taken as an apprentice in a paper mill. Then Govinda's second son worked as an apprentice in a paper mill. गोटे paper mill रे से machine operator हिसाब रे काम करे, apprentice in a paper mill. There remain only the youngest son. तापर आउर होइला किसे ना गोविंदर youngest son means सबुठु सभा साना पुओ तार. Youngest son, a mere 13 years old, who is just 13 years old, who is just a small child of 13 years old. 13 years old. Out of three, he alone showed promise. Then तीन जनक भितर से सानो पुओर ही इंटरेस्ट रे alone showed promise. एटी promise टे interest sense रे यूज कराई छै. Of taking up the ancestral profession. Of taking up the ancestral profession means ancestral profession कहले कौलिक वृत्ति. That means the work that his forefathers have been doing. माने during his forefathers time. Forefather को time रो जो work टा हेई आसु अछि सेटा कहते ancestral profession. Thus restoring measure of calm to the father's mind. जोटा कि माने गोविंद को टिके सांत्वना दउतले जे जा हो फैमिली रो जीविकाटा तो मेंटेन हेई परिबो जे भी तले जणे इंटरेस्ट शो करूची एतपय गोविंद टिके हैप्पी थिला. In all these years, this experience of it, जितने दिन मान ता लाइफ रे जो तुनु से काम करिबा सिखला, जो तुनु काम करि आसी, in all these years, this experience of it, ए जो experience ता this experience, what experience? Now the breaking of the elephant's trunk means the breaking of the immense trunk was a new one. That means the experience was a new one for him. ए experience ता पे गोटे नुवा थिला. A feeling of being alone in the ravenous darkness. जेमति कि से निजु को एकुटिया फील करथला. A feeling of being ravenous, a feeling of being alone. कोन फील करथला ना एकुटिया फील करथला in a ravenous darkness. मीन गोटे घंच अंधकार भितर से निजु को alone फील करता. Means there was none to help him. ताको हेल्प करिया पे जेमति सेठी केही नांती. He is all alone at that ravenous darkness. All his thinking brought Govinda to the inescapable conclusion. जिते प्रकार से चिंता करूची, जिते चेष्टा करूची जे कोठी भूलटा रही छे फाइंड आउट करिया पे से पुणी बुली बुली आसी सेही गोटे conclusion टा inescapable conclusion. Inescapable conclusion means the conclusion from which he cannot escape himself. जो थ्रू से निजुको escape करि पर न था तेनो सेत पे कहै छे inescapable conclusion. In the conclusion that there was what is that conclusion? That there was an element of a supernatural in the mysterious breaking of the mystery. कौन conclusion है? Now there was
ए सुपरन्याचुरल फोर्स या पछरे गोटे सुपरन्याचुरल फोर्स रो हाथ रोचे क्या पछरे ना द मिस्टीरियस ब्रेकिंग ऑफ द इमेज रो जो मिस्टीरियस ब्रेकिंग जो अद्भुत उपाय भांगुची सा पछरे निश्चित भाव किसी गोटे सुपरन्याचुरल पावर अच्छी बोली से सही कंक्लूजन फाइनल जिते भाविले भी आसिक सही कंक्लूजन पहुंचुची मिस्टीरियस ब्रेकिंग ऑफ द इमेज बट व्हाट हाड ही डन टू डिजर्व दिस पुणी से भावुची जे मु कौन कली जे मते कहीं दंड मिलला मते कहीं सुपरन्याचुरल पावर ये पेन दउची सो व्हाट हाड ही डन टू डिजर्व दिस हिज लाइफ वाज ऑर्डर दैट मीन्स ही वाज इन ऑर्डर स्टेज किछि ठीक भूल बाणी पने भलो मंद किछि भाई पने माने तार कोथरे भी मन लागना था लाइफ इज एन ऑर्डर रेस्टेंट मीन्स वेरी पेनफुल सो वेयर कुड ही हैव गॉन रॉन्ग से प्रभु जगह सब जगह भाबुता है जे मु कोठी भूल कली हैव गॉन रॉन्ग true that a subtle change had come about in the designing तापर कहूँ एटा सत कथा जे subtle change means a little change had come about in the figure a little change had come about in the designing of the clay figure in the eye catching new apparel the eye catching new apparel कहले eye catch माने देखु देखु जेमते आखिटा ऑटोमेटिकली सेड के ड्रैग हे जिवो सेत पे कहै छै eye catching means एते ब्यूटीफुल हेतिबो eye catching कहले ब्यूटीफुल मीन्स eye catching of new apparel means a look apparel ta asti appearance means new look and in the shades of luminous paint out of shades of luminous means which shining paint it korai che luminous paint he was using these days जो shining paint को आजिकल दिन बा एबे से माने व्यवहार करूछनी बा सोडो से व्यवहार करूछि these days then he said but he had not gone about making the changes on his own way तापर कहूछि चेंजेस ता तो मु करिनी मु तो निजे निजे चेंजेसटा क्रिएट करिनी दे हाड वांटेड एटी देटा व्यवहार है कौ मान पे ना लोक मान पे पीपल मान लोक माने चाहती दे हाड वांटेड से चाहूले दे आर गॉड्स टू बी मोर इन ट्यून विथ द टाइम समय अनुसार ताका गॉड टे मोर इन ट्यून मींस मोर क्लासी मोर डिजाइनिंग मोर आई कैचिंग अपीयरल एडा लोक माने चाहती ग्रेजुअली देयरफॉर ही हाड एंडर तो सेति पई समान देयरफॉर he had endowed the goddesses तेणु से goddess को endowed करुचनी goddess को डिजाइन करुचनी डेकोरेट करुचनी endowed the goddesses with slim and curved body माने टिके पतला टिके कर्व मींस टिके अंका अंका बॉडी ना बट टिके डिजाइनिंग बॉडीज बट देयर वाज नथिंग फ्लैशी अबाउट दिस इमेज तापर पुणी गोविंद कहूची जे एई इमेज रा तो सेमति किछि फ्लैशी नाही सेमति किछि आई कैचिंग अपीरल नाही गणेश ही वाज एट वर्क जो मूर्ति रा से करूची ही वाज एट वर्क में जो मूर्ति रा काम सरीनी ऑन then why should this happen now ताले एटा काहे के होची मु तो सेमति किछि करिनी ताले काहे के एटा घटिला और was it because the price of 250 rupees he had asked मन मन भाबुची जे इमेज पे जो 250 rupees मु मागी छिबा 250 rupees प्राइस मु फिक्स करिछि was a large एटा गोटे अधिका टंका हे होछु was a large and unreasonable sum माने ए मूर्ति पे एतिकी टंका हबा कथा नुह तेनो गोटे unreasonable sum फॉर ए 6 फुट हाइट इमेज ऑफ गणेश 6 फुट ऊंचा मूर्ति जो तैयारी करिछि जो 250 रुपीज मु रखिछि तार प्राइस ता एटा होय तो रिजनेबल नुह जोति पय सुपरनैचुरल फोर्स मो ऊपर राखुछन बा भाबुछन मु जेमति माने गोटे पोस्ट फुली बा गोटे लोभरे मु दिन सेडा को मागी देछि ग्रिड स्विमिंग ग्रिड मु लोभर एटा को ए पैसाटा बोते फिक्स कर देछि बोली से भाबिछंती he saw his youngest son से देखला ता youngest son जे काम करिया माने कंस्ट्रक्शनल प्रॉपर्टी दा प्रोफेशन जार इंटरेस्ट थिला saw his youngest son रंजू come into the work room से रंजू आसिला वर्क रूम माने जो रूम भीतर से मूर्ति तैयार कर लिखाला वर्क रूम and stare at the unfinished गणेश गोटे लुक एट कांस्टेंट लुक आगे से अनफिनिश्ड गणेश ऊपर गोटे कांस्टेंट लुक माने पूरा भलो करी नजर कला stare at the unfinished गणेश there it happen again कहला पुणी गोटे कहूँ देख सारी गला कहला पुणी घटला पुणी भांगला देयर इज हैपन अगेन द बॉय मम्बल्ड पिटरली माने टिके चिड़िला भଳି कहला कहला देयर इट हैपन अगेन पुणी थर घटला एंड प्लीज दैट द पेन ही सॉ इन द ओल्ड मैन आईज आ देखला मते ता बापा भी बहुत टेंशन भीतर अछि ए सब जिंस से नजर कला के साना द इमेज स्टूड इनकम्प्लीट तेणु जेहेतु भांगी जाय तेणु सेटा इनकम्प्लीट कंप्लीट हे परनी to one side of the room रो गोटे साइड के थिला to one side of the room facing the grilled window माने गोटे पट रूम थिला ता सामना रे थिला गोटे विंडो जोतरे ग्रिल लागि थिला facing the grilled window set into the northern wall grilled window थिला northern wall set into the northern wall cracks had started appearing crack appear कर माने फाटी जायता ड्राई अप होइता त crack appear करथिला at several places विभिन्न जगह at several places विभिन्न जगह सब क्रैक हेतला माने सुखी जायतला पानीटा ड्राई अप हेतला सेठी कोन हेतला ना क्रैक्स हेतला सब फाटो हेतला सर
where the clay had dried, जोटी माटीटा पूरा सुखी जाइतिला. The straw skeleton, तेणु भांगीगला पर जो straw skeleton जो कुटार छांचटा तैयारी कराइता, the straw skeleton of the image showed its fork माने जो सुंडटा बंका है, ट्रंकटा जो बंका है, fork through the mud, से माटी भितर से देखा माने माटी खसी जाइतिला सेठू. where the trunk had turned, जोटी ट्रंकटा टिके टर्न करथिला सेही जगह देखा होतला straw skeleton, कारण माटी छेटू छाड़ी जाइछि. क्विकली रंजू क्लियर द डेब्रिज, तापरे रंजू कौन कला ना से जो जगह अड़िया सब पड़ता ताको डेब्रिज माने अड़िया गुड़ा डाटी थिंग्स गुड़ा ताको क्लियर कर देला. डेब्रिज सराउंडिंग द इमेज, जोटा इमेज चारिपट सब अड़िया गुड़ा पड़ता ताको क्लीन कर देला. ही ब्रॉट ए फ्रेश मास ऑफ क्ले, तापरे किछि माटी आनला फ्रेश मास ऑफ क्ले एंड प्लेस्ड इज बिफोर हिज फादर, ताको ता बापा पाखरे थोइतला. प्लेस्ड इज बिफोर हिज फादर टू नीड माने माटी को चकटिया पे टू नीड. गोविंद लुक्ड क्लोजली आट हिज सन, आ गोविंद ठीक सही समय क्लोजली देखुता है पुओ को जे केमती से काम रे व्यस्त रहउछि, निजो केमती इन्वॉल्व कर दोछि वर्क रे. लुक एट सन, नो देयर वाज नो ट्रेस ऑफ रेडिकुल एविडेंट ऑन द यंग फेस, तेनु से ते विब्रत होनी ते ओरिड होनी, हां हेछि तेनु काम करिया पई से पुणी बाहरी पड़िछि. फेस नो हरासनेस ऑफ यूथ, कोन से हरासनेस भी ताते देखिया को मिलु नाही. मियरली ए म्यूट एक्सेप्ट, हां जहा घटुछि ताको से एक्सेप्ट करनोछि. मियरली ए म्यूट माने चुपचापली ताको ग्रहण करनोछि. acceptance of the moment. His glance turned to the image again, तेणु पुणी थरे गोविंद नजर पड़ुछि का पर नहीं इमेज पर. glance turned to the image again and before he realized what he was doing, तेणु कौन से करूतला, before he was realized माने से रियलाइज करूछि जे कौन करूतला बेली. his hands, ता हाथ कौन करूतला बेली were once again kneading the clay, पुणी ता हाथ पड़ेला माटी प्रिपेयर करबे माटी चकटिया पे. kneading the clay वार्मली एंड प्रोफेशनली, जमती तांकर मूर्ति पाई माटी प्रिपेयर करिया कथा, जेतिकी स्टिकीनेस करिया कथा सेम से ताको चकटिया को आरंभ कला. मेकिंग इट इनटू द राइट स्टिकीनेस, ताको ठीक जेमती राइट स्टिकीनेस जेमती हबा कथा सेही बडी ताको प्रिपेयर कला. आज ही बिगान केयरफुली फिलिंग द टीयर्स, तापर जो फाटो हेतला टीयर्स रो ताको फिलिंग कर देला, केयरफुली ताको फिलिंग कर देला. गोविंद हाड नियरली फिनिश्ड मेंडिंग द ब्रोकन ट्रंक, तापर से ब्रोकन ट्रंक को भी तैयारी कर देला. मेंडिंग द ब्रोकन ट्रंक when रंजू इंटरप्टेड हिम, काम सारी आसला से रंजू मझे आसी कहूँ तो बापा इंटरप्टेड हिम ता काम मझे. फादर द ड्रॉट फ्रॉम द विंडो, कहला से ड्रॉट टाको विंड अर्थ यूज कराई छि. कहला फादर द ड्रॉट फ्रॉम द विंडो, जो नॉर्दर्न वॉल रो पवनटा आसुछि मे बी इट शुड बी क्लोज, तेणु मु भाबुछि झरकाटा को बंद, कारण से पवन रे होय तो भांगी जाउछि, तेणु भाबुछि झरकाटा को बंद कर दबा. द इमेज नाउ अपीयर्ड आज क्लीन एंड स्मूथ आज मैनकुइन, से गोविंद पूरा मेंडिंग काम सार सारे तेणु इमेज का बर्तमान क्लीन एंड स्मूथ आज ए मैनकुइन मीन गोटे ब्यूटीफुल पीस ऑफ एंटिक भाया लगुता सुंदर भाव से तैयारी कर देता है. देयर वर नो ट्रेस ऑफ रिकवरिंग डिजास्टर, मूर्तिर कौटी भी टिके किसी माने फटा नथिला, कौटी भी किसी भूल नथिला, पूरा गोटे मैनकुइन भाया लगुला मूर्तिटा. डिजास्टर द पॉसिबिलिटी ऑफ गस्ट ऑफ विंड ब्रेकिंग द इमेज वाज टू रिमोट, तेणु विंड आसिकी ब्रेकिंग करूथो इमेजटा एटा गोटे टू रिमोट, दैट मीन दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल, एटा को एक्सेप्ट करा जाई परिबो नै. रिमोट गोविंद थॉट, गोविंद भाबिला. बट द इमेज हैड बीन प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द ओपन, तापर से कहूछि हां इमेजटा भी पूरा क्लोज अछि ओपन विंडो पाको, जरा खोला झरका पाको. ओनली ए मीटर अवे, माने झरकाटा मात्र गोटे मीटर डिस्टेंस रे थिला. he had shifted the image himself, आउ से क्लोज करथिला निजे ही गोविंद शिफ्ट करथिला टुवर्ड्स द विंडो. डेलिबरेटली मीन्स ए इच्छाकृत भाव से ताको क्लोज करथिला, झरका पाको मूर्तिटी को आनिथिला. इन ऑर्डर टू मोर लाइट, काहे इच्छा करथिला ना मूर्तिटा जेंति अधिक लाइट पड़िबो, इन ऑर्डर टू दैट मोर लाइट वुड बी अवेलेबल फॉर हिज वर्क, काम करिया पे लाइट टिके भलो पड़िबो. एंड द वेट क्ले वुड ड्राई अप सूनर, बाकी वेट क्लेटा बहुत जल्दी सुखी पारिबो, ड्राई सूनर. फेसिंग द ड्रॉट ऑफ विंडो, माने पवन बाजी के सुखी जीव, लाइट भी मिलिबो काम करिया पे भाबिके. बट दैट विंड कुड बी डिस्ट्रॉयड, किंतु पवन जे डिस्ट्रॉय हेतो, पवन जे को भांगुतिबो, हैड नेवर एंटर्ड हिज माइंड, गोविंद माइंड रे एटा पसिलानी, गोविंद एटा को केबे भी एक्सेप्ट कला नाही. ही डिसाइडेड नॉट द विंड, इट इज सीम्स इम्पॉसिबल, कहला ना एटा विंड नो, इट सीम्स इम्पॉसिबल, विंड कैन नॉट डू लाइक दिस, विंड एभली काम केबे भी करिवो नै. जो रंजू जो छोट पिला हिसाब रे जो कंक्लूजन काढितला सेटा गोविंद मोटे भी एक्सेप्ट कला नै. सो दिस इज हाउ द सेकंड पार्ट कंप्लीटेड. द थर्ड पार्ट और द कंक्लूडिंग पार्ट I will upload it recently and you all listen it properly. That's all.